So every question of hinship, dry docking, you will do iteration. Unless it is mentioned in the question, assume data remains constant. Does this answer any clarifications or doubts that you require, that you had? Is that okay? Okay, sir. So you will do iteration irrespective. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है assume data remain constant, don't do iteration. बात खत्म. That is how it goes. And iteration means one cycle. That means W minus P, W1, and उसके बाद में KM1, and then repeating the cycle till you get P1. जैसे P1 आ गया, लाइन खींच दो, दुकान बंद, आगे नहीं बढ़ना. That is the more accurate P, and that's that. That's how you'll progress. Okay, let's सर move ahead. हाँ जी. सर एक क्वेश्चन भेजा मैंने ग्रुप में, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, एमवी हिंडशिप का आया हुआ है. तो उसमें सर दे हैव नॉट मेंशन्ड द केजी इन दैट, तो कैसे प्रोसीड करेंगे? तो केजी बाद में दी गई होगी क्वेश्चन में, so it would have been given later. केजी के बिना तो हो ही नहीं सकता. Okay, मेरे पास तो मतलब ये क्वेश्चन है, मतलब है ना? Let me have a look at it. I don't have my mobile right now. It's on charge. So Okay, I'll have a okay, look sir, at it. I'll have a look at it and then I'll let you know कि क्या है. But most likely केजी तो चाहिए ही होगा. केजी के बिना तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते. Because क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? Find out क्या करना है? सर वर्चुअल जीएम, ये 2.5 वाला वाटर लाइन वाला केस है सर. इसमें ये फॉल है. Yes sir, fall is reduced by 1.5 meter, dock water height is 6 meter, वो वाला है सर इसमें. तो 2.5 वाला कोई केस है, बट सर केजी नहीं है हमारे पास, तो केजी चाहिए. तो उसके बिना तो इनिशियल जीएम ही नहीं निकलेगा. हाँ जी सर, वो जीएम तक ही नहीं निकलता फिर. ओके सर, वो मेरे को लगा कोई और ट्रिक तो नहीं होगी. नहीं कोई और ट्रिक. नो द ट्रिक. So we say you'll do it by the long formula. चेक करोगे. फॉल मतलब चेक करना है. So वाटर लाइन 3 का चेक होगा. दोनों फॉर्मूले में निकाल के सर फिर चेक. हाँ चेक होगा. दैट मीन्स P3 निकालोगे, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालोगे फॉर 3, चेक वाटर लाइन. फिर उसके बाद देखोगे P बाय द लॉन्ग फॉर्मूला एंड कंपेयर P एंड P3 जैसे ए शेप में करते थे, सेम चीज. ओके सर. Okay, so let's now come to hinship grounding, question number 97. Question number 97. We are now talking about hinship grounding. So hinship grounding में basically we know initial drafts. So initial drafts हमें given है, फाइनल ड्राफ्ट्स भी गिवन हैं. सो इनिशियल ड्राफ्ट से हम इनिशियल हाई ड्राफ्ट निकाल लेंगे, फाइनल ड्राफ्ट से हम फाइनल हाई ड्राफ्ट निकाल लेंगे. ठीक है? इज दैट ओके? यस सर. इनिशियल हाई ड्राफ्ट से हमें W इनिशियल मिल जाएगी. इज दैट ओके? फाइनल हाई ड्राफ्ट से W1 W फाइनल मिल जाएगी. डिफरेंस ऑफ द टू फेलोज will give us what?
P को हाँ जी, P. P. एब्सोल्युटली राइट, P, sir. ए पी मिलेगा. इनिशियल माइनस W1 या W फाइनल विल गिव मी P. ये मेरा अब थ्रस्ट है, और क्योंकि ये मेरे को ड्राफ्ट से मिल रहा है, इसका मतलब ये एक्यूरेट है. एग्री? Yes, sir. So that means in hinge shape grounding, no iteration is done. This is the good news. Because the P that we get is an accurate P. Is this okay with everyone? yes sir. All right. Yes, sir. एक बारी P मिल गया तो then you know how to calculate V loss, वो आपको आता है. You know how to calculate RGM, वो भी आपको आता है. Agreed? Yes, sir. All right. So ये बेसिकली हमारी hinge shape grounding की समरी स्टोरी है. अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं. MV hinge ship has sailed out from port in condition number 8. So initial condition of grounding is condition number 8. And soon after departure she gets grounded. So ये मेरी grounding हो गई. Condition number 8, grounded. On an isolated rock without any damage to her hull. अच्छा, इसके बाद the drafts then, so मेरे initial drafts कौन से हुए? Condition number 8 के drafts हो गए, जो मेरे को मिल जाएंगे forward and aft. वो मेरे initial drafts हो जाएंगे grounding के. उसके बाद टाइड गिरता है कुछ, and then final condition. The drafts then are observed to be forward, final drafts 5.9, aft 9.3. ये मेरी फाइनल कंडीशन हो गई ग्राउंडिंग जब टाइड गिरने के बाद. वी हैव टू कैलकुलेट द फॉलोइंग अप थ्रस्ट एंड ऑल दैट. सो अब शुरू करते हैं. सो सबसे पहले कंडीशन नंबर 8 में घुसते हैं, और कंडीशन नंबर 8 के W इनिशियल निकाल लेते हैं. कितनी आती है? कंडीशन नंबर 8 16133. okay. How much is the forward draft? Condition number 8 6.703. half draft 8.860. ओके. सो ये मेरी इनिशियल कंडीशन की स्टैटिस्टिक्स है. फाइनल कंडीशन, लेट अस फाइंड आउट द फाइनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट. दैट मीन्स मीन ड्राफ्ट इन दोनों का, ट्रिम इन दोनों की. सो दैट विल बी 3.40. मीन ड्राफ्ट विल बी 7.60. And for the mean draft, LCF will be, picking out from the book only, 70.979. Therefore, for the final condition, high draft will be draft aft
minus trim into LCF upon LBP. ये कैलकुलेट किया, this gives me the hydrostatic draft. ये आया 7.614. अब इस हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट के लिए फाइनल कंडीशन के लिए मैं डेटा निकाल लेता हूं. So W1 for this hydrostatic draft. Again picking up the values from the book. 15725.8 tons. MCTC1 191.996. LCB1 72.687 meters. LCF1 70.965, and finally KM1 8.238 meters. ये मेरा फाइनल डेटा है, फाइनल कंडीशन का. Now W initial minus W1. Will give me P. So 16133 minus 15725.8. P is equal to 407.2. 40. और क्योंकि ये मैंने हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से लिया है, डिस्प्लेसमेंट से लिया है, देयरफॉर ये एक्यूरेट है. देयरफॉर नो अल्टरेशन इज रिक्वायर्ड. सो ये मेरा पहला पार्ट हो गया. दिस इज माय अपथ्रस्ट. एनी डाउट सो फार? Okay. No, sir. Going on to the next. All right. Going to the second part of the question now. Second part says position of grounding with respect to AP, where the grounding occurred. That means I want AG. Position of grounding. मुझे AG चाहिए. अब यहाँ पे हम ए शेप से थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगे. वी विल नॉट यूज द ए शेप वाला मेथडोलॉजी. हम हिंज शेप में हैं. यहाँ पे हमारे लॉन्जिट्यूडनल मोमेंट्स आ जाते हैं. हिंज शेप में मेरा फॉर्मूला है ट्रिम इज इक्वल टू W into LCB minus LCG over MCTC into 100. ये मेरा ट्रिम का फॉर्मूला है.
So trim final, trim 1, W1, LCB1, LCG1, MCTC1. क्योंकि I am in the final condition. So my final trim 3.4. My final displacement 15725.8 bracket open. LCB1 72.687 minus LCG1 to find this I don't know, ये मुझे ढूंढनी है, over MCTC1 191.996 into 100, cross multiply and obtain LCG1. एलसीबी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? LCG की वैल्यू ढूंढनी है. LCB is 72.687. Sir, 68.536. 68.536. So my final LCG in the final condition is 68.536 meters. This is my distance of the G from AP. Correct? Is that okay? So now Yes, sir. I make what is called as a longitudinal moments table. हिंशिप में हमेशा हम लॉन्जिट्यूडनल मोमेंट्स का टेबल बनाते हैं. ए शिप में हम ट्रिमिंग मोमेंट्स का टेबल बनाते हैं, इसमें लॉन्जिट्यूडनल मोमेंट्स. सो लॉन्जिट्यूडनल मोमेंट्स, वेट्स, LCG, लॉन्ग मोमेंट्स, initial condition. So go into condition number 8, left side, bottom column, bottom row. You will get the initial displacement. वहां पे एक इनिशियल LCG दिया हुआ होगा लेफ्ट साइड पे. Sir, 70.045. और उसी के आगे में लॉन्ग मोमेंट्स भी दिए होंगे. लेफ्ट साइड पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके. सर 1130041. Is this line okay with everyone? Initial condition. Now P tons has been virtually discharged. So minus 407.2. From where it is getting discharged, I don't know. G. That point G I have to find out. So I'm calling it as X from aft perpendicular. So minus 407.2x. Difference of these two fellows will give me W1, which is 15725.8, which I already know. Final long moments
FLM will be 11,341 minus 407.2x. FLM divided by W1 will give me final LCG. That is LCG1. So LCG1 is equal to 11,341 minus 407.2x divided by 15725.8, and this whole thing is equal to 68.536. ये वाला solve for x. And x is nothing but AG. One two 128.334. 128.334 meters forward of half perpendicular AP. AP. ये मेरी point of grounding है. This is the answer. हाँ जी, any doubts? सर ये इसी कॉलम में ये जो 16133 मल्टीप्लाई बाय 70.045 जो सर ये नॉर्मल मल्टीप्लाई करने पे इतना नहीं आ रहा है. हाँ, तो you see what happens is basically जब ये किताब लिखी गई थी 70s में, तो उस वक्त ये लॉग टेबल से कैलकुलेट हुए थे. सो लॉग टेबल से ये वैल्यू आती है. अब अगर मैं अभी कैलसी में जाऊंगा तो थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू आएगी. ओके. हाँ सर 4 टर्म्स लेस आ रहा है. बट ओवरऑल मैं जब फाइनल आंसर में जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं आएगा. आंसर मेरा सेम ही आएगा. If I go with any value, my final answer will be the same. So don't bother. You can use this value. This is acceptable in exams. ओके सर. Because the solutions which are provided to the examiner, they are also based on this only. So both are acceptable. Somebody wants to do the final calculation with using the calci, it's fine. No issues. We don't cut any marks for it. But there are no extra marks for it also. I'll be clear on this part. So one can जहाँ पे हम time save कर सकते हैं वो करेंगे, you know, that kind of a thing. Okay. हाँ जी. Third part. VGM of the vessel then. VGM of the vessel then. All right. So third part. V loss is equal to P into Km1 upon W initial. So P 407.2 into Km1 8.238 upon W initial 16133. So V loss निकालो. 0.208.
0.208 मीटर. ओके, सो मेरा वी लॉस आ गया. अच्छा, अब FSC1 is equal to FSM upon W1. Now go to condition number 8 and you will find the last column will give you the FSM. One three 1372. 1372. 1372 upon 15725.8. One variation here, sometimes you are not given FSM in a question or in the condition, this thing, but you are given an FSC. So then you know how to handle that. FSC into W initial also gives you the FSM, correct? So KM1 is 8.238 meters minus kg initial. So go to condition number 8, find out the kg. The 7.263. ठीक है. So GM1 solid will be 0.975. okay. This is my GM1 solid minus FSC1 minus 0.087 gives me GM1 fluid. Triple eight. This is my GM1 fluid minus the V loss. Will give me RGM1 fluid. This is the VGM of the vessel or RGM of the vessel. Then use the same language as the question. So VGM. Okay. This is the VGM of the vessel then. Any doubts on this question, this part? Okay. Next part. Angle of heel if she grounds 2 meters to starboard of center line. DH is 2 meters to starboard of center line. So tan theta is equal to GG1 upon GM fluid. GG1 is nothing but WD by W into GM fluid. Small w is nothing but P. D is nothing but distance from center line, DH. Displacement is W1, the displacement in the condition of healing, into VGM1 fluid.
So put the values. 407.2 into 2 meters to starboard of center line. 15725.8 into VGM of the vessel then 0.68. So theta will be equal to 4.3 degrees. 4.36 degrees. Since she's got grounded to starboard of center line, this will be a port heel. Because ये रॉक जो है ये इधर स्टार्बोर्ड साइड पे है तो ये ऐसे जाएगा जहाज. Is that okay? हाँ जी, any doubts? Okay, last part. Rise of tide required for the ship to refloat. Rise of tide required for the ship to refloat. Now I come back to my A-shape वाला methodology जो मैंने कराया था आपको. Draft at center of flotation, hydrostatic draft, is draft aft minus correction. Correction is trim into LCF or AF upon LBP. I want draft at point G for the initial. So initial draft aft, that is 8.86, minus initial trim, difference of these two fellows. How much is it? That is 2.157 into AG. AG 128.334 upon 143.16. Remember the formula from A-shape? Yes, sir. ये शिप के भी मिक्स हो जाएंगे फॉर्मूले मतलब सारे. नहीं, मैंने वो जान के वहां पे ये वाला फॉर्मूला कराया था ताकि रिवीजन हो रही है. मैंने जान के उसको करने का दूसरा तरीका भी था, बट मैंने जान के वहां कराया था ताकि ये डबल रिवीजन हो रही है. वो भी वहां पे भी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है. So this will be 6.926. 6.926. Now for the final water line, DG1. Final draft aft, that is 9.3.
minus final trim 3.40. Point of grounding has remained the same. Upon 143.16. Difference of the two fellows. DG. Difference DG1 gives you rise of tide. So rise of tide should be greater than 0.674. So she will float off when the rise of tide is greater than 0.674 meters. सर ये डीजी जो एक्चुअली में है तो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ही नहीं, हिला दिया तुमने मुझे पूरा. No, sir. Is DG hydrostatic draft? At the point of grounding. It is the draft at the point of grounding. It is not the hydrostatic draft. Remember मैंने x and y करके बताया समझाया था. यस सर, यस सर, यस सर. So that is the commonest mistake which is made. People start calling y as the as the fall of tide or rise of tide, whichever. और इस राइज ऑफ टाइड के मैंने आपको 4 नाम गिनाए थे. इसके 4 भाई बंधु हैं. Have a look. इसके क्या नाम है? Yes, sir. Just revise that. क्या था? Poor name. A-ship grounding. Change in draft at the point of grounding, fall in tide, fall in water line after grounding, rise of tide required for her to refloat. Correct. Absolutely right. ये 4 नाम है एक ही चीज के. चारों में से कोई भी चीज पूछी जाए, डीजी निकालना, DG1 निकालना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, बात खत्म. राइज ऑफ टाइड में ग्रेटर कर देना उसको. ठीक है. Is that okay? यस सर. तो ये आपके Yes, नाम हो sir. गए. So we are done with hinge ship grounding also. So now you can do any question of dry docking or grounding from the past pages. Any question. अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो. एक दो बाउंसर्स हैं, वो बाउंसर्स को मैं अगले हफ्ते हैंडल करूंगा, इस हफ्ते नहीं करना चाहता. तो देयर आर कपल ऑफ बाउंसर्स इन दिस, उनको मैं सेपरेट टैकल करूंगा. सर पास्ट पेपर्स कहाँ से मिल सकते हैं? अरे बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हो. बताओ भाई, पास्ट पेपर कहाँ से मिलेंगे? एग्जाम ऐप डाउनलोड ग्रुप पे शेयर कर देंगे सर. शेयर करने की क्या जरूरत है? वो तो भैया
ऐप है